So today we will find out the recurrence relation. Recurrence relation for moments of t distribution. ये फाइंड आउट करेंगे हम. u2r हमने फाइंड आउट कर लिया था. This was n into 2r minus 3 upon n minus 2r. This was n raised to power r, 2r minus 1, 2r minus 3 up to 1 upon minus 2, minus 4, and up to n minus 2r n minus 2. Right? अब हमने क्या करना है? Now changing, I'm changing r2 r minus 1 u to r minus 1. अब जब चेंज करेंगे तो n की जो पावर है r हो जाएगी r minus 1. राइट? तो r को चेंज करना है r minus 1 में. सो दिस इज जब आप इसको चेंज करेंगे r minus 1 में. फर्स्ट कैलकुलेट करके बता रही हूँ. क्या बन गया ये? 2r minus 3. इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा 2r minus 3 से. फिर अगला क्या हो जाएगा? वैसे तो रिडक्शन ही हो रही है, तो रिडक्शन अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगी? 1 तक ही जाएगी. ठीक है, सेम है. एक इसमें तो n है, जहाँ पे r है हमें वो चेंज करना है. दिस इज n minus 2 minus r minus 2. ठीक है. अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. अब आप देखिए, व्हेन यू विल डिवाइड, on dividing one end, we get mu 2r divided by mu 2r. So this is equal to, so you have mu 2r tha n raised to power r 2r minus 1 2r minus 3 on up to 3 into 1 divided by n minus 2 minus 4 so on up to n minus 2r. डिवाइड कर रहे हैं. This becomes n raised to power r minus 1 2r minus 3 2r minus 5 on up to 3 into 1 remains n minus 2 n minus 4 n minus 2r minus. तो व्हेन यू विल डिवाइड, अब आपको पता है ये टर्म्स ऊपर चली जाएंगी, नीचे आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी. ठीक है. हमें एक्चुअली क्या करना है? इनको कैंसिल आउट. माइनस मतलब सारी टर्म्स इसके साथ कट जाएंगे, सारी के साथ. ठीक है. इसी तरह अब देखो, इसमें 2 का डिफरेंस है ना. इसका मतलब इसके पीछे वाली जो टर्म्स हैं, इसके पीछे क्या टर्म होगी? इसके पीछे होगी n minus 2 minus 2. ठीक है. सो यहाँ तो n minus 2 1 minus 4 होगी. n minus 2 गया, इधर से n minus 4 गया और इधर से ये. ठीक है जी. सो दिस इज इक्वल टू, अब इधर पावर क्या है? ऊपर आ जाएगी n raised to power r minus r plus 1. So you are left with 2r minus 1 upon n minus 2. Okay. So it implies this becomes n into 2r minus 2r minus 1 upon n minus 2. With respect to the condition that n is greater than 2r. Right? So therefore the recurrence relation for moments of a distribution is mu 2r is equal to
2r minus n into 2r minus 1 upon n minus 2r into mu 2r with respect to the condition that n is greater than डिनोमिनेटर में है तो वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2r होनी चाहिए. ठीक है जी. So what does it mean in particular? On taking r is equal to 1, ये बन गया mu2 n into, when you will put the value here n minus, this becomes 2 upon n minus. देखो डिनोमिनेटर की कंडीशन वही चल रही है. जब आप यहाँ r को पुट करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, n is greater than 2r with respect to the condition that n is greater, that is n minus 2 greater than 0 लेके जाए. So what is mu2? Mu2 is the variance of the distribution. Variance of the distribution, right? Now mu4, put r is equal to 2. So what you will get? mu4. 2 into 2. 2 into 2 आएगा. So बनेगा mu4. के अब दो टर्म्स आपने लेनी है r को, तो आपके पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे. When you will put r is equal to 2, this is just what you will get here, n into 2 into 2 minus 3. राइट. अब देखो एक टर्म नहीं लिखनी है हमने क्योंकि रेफरेंस रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम. इसमें अगर आप एक टर्म लिखोगे तो ये तो एक ही टर्म आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट यू विल डू हियर. सो आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज. सो हियर इज mu4 n, एक्चुअली फॉर्मूला है n into 2r minus 3 upon n minus 2r mu 2r minus 2. राइट. अब जब आपने वहां पे पुट किया था in the relation r is equal to जब आपने पुट किया 1 तो ये यहाँ पे वहां पे बन रहा था mu2 into 1 minus 2. तो ये 2 minus 2 यानी mu0, और mu0 हमेशा 1 होता है. ये वाले में आई हैव स्किप्ड. आपने जब mu1 लिखना है, mu2 लिख रहे हैं जब आप, mu2 था n upon n minus 2 और यहाँ पे साथ में क्या आएगा mu0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है. So here you are calculating mu4. So this is n into 2 into 4 minus 3 upon n minus मैम 2r minus 1. क्या बेटे? हाँ सॉरी 2r minus, सॉरी 2r, सॉरी एक मिनट दोबारा कर देते हैं. mu4 is equal to n into 2r minus 1 upon n minus 2r. ठीक है, right? Here is mu2r mu4 n into 2 into 2 into 4. You are putting n 2 here. This is n into 2 into 2. Here 2 into 2 minus into 2 minus 2. So this is n into this becomes 2 2s are 4, 4 minus 1, n into 3. Okay, and here n minus 4. And here is what? This is 4 minus 2 mu2. So you will get the value of mu2 here. So this is 3 n minus 4. What is the value of mu2? We have calculated n into n upon n minus 2. Okay, so ultimately this is into. So what mu4? What is the value of mu4 now? This is n square into 3 upon n minus 2 into n minus, right? With respect to the condition that क्या आएगी बड़ी? n is greater than 4. So here we can find out all the coefficients. So जो major coefficients हैं वही find out करेंगे. Now the beta coefficients. What is the value of beta 1? This is mu3 square upon mu2 cube, right? So odd order moments we have already calculated in T distribution. They are equal to 0. So therefore beta 1 is 0. It implies that T distribution is symmetrical in nature. Right?
Then beta. Beta 2 is mu4. These are the even order moments we have already calculated. We will put the value and what we will got n minus 2 upon n minus 4 with respect to a condition that n is greater than 4. Right? So now, as n tends to infinity, what will be its value? So you will taking the limits. तो यहाँ आप ऊपर नीचे n से डिवाइड कर सकते हैं. So you will get 1 minus 2 by n. या n कॉमन निकाल लीजिए. Okay. So limit what you will get. What is the value? Exactly 3 आ गई. So therefore, what we can conclude, as n tends to infinity, beta 2 is tending to 3 and beta 1 to already क्या है 0 है. Therefore, P distribution behaves as normal, right? Similarly, जैसे हमने chi-square में किया था, what is the limiting form of chi-square distribution? The limiting form of chi-square distribution is the standard normal distribution. Now, next we will find out the moment generating. Moment generating function, बेटा ये हम MGF जो है वो हम मूवमेंट से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट की बात करते हो. लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इफ P follows Tn distribution, ठीक है जी, then all the movements of order 2 are less than n. हर बारी देखो जब आपने म्यू पीछे जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, सो जब हमने म्यू 2r निकाला उसकी कंडीशन क्या थी, नीचे क्या रहा था, n minus 2r आ रहा था डिवीजन में. तो हम कंडीशन को क्या लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इज n इज ग्रेटर देन 2r, दैट इज 2r इज लेस देन n. यानी इतने ऑर्डर की मूवमेंट्स ही निकल सकती हैं, बाकी ऑर्डर 2r लेस देन n exist, but the movements of order 2 are greater than or equal to n do not exist. ठीक है. So आधी निकल रही है, आधी नहीं निकल रही. It doesn't have any meaning. It implies we can see that MGF of P distribution doesn't exist. Simple. Right? Now next is a limiting form of next property. We are doing the properties. So first property we have find out the moments, even odd order movements, and we find out the we have find out the odd order. We calculated the odd order movements. Then we calculate mean, variance. So mean और variance आपको याद रहना है. mu1 dash is 0 t distribution का, mu2 is n1 n is the variance, right? So now we will continue with the, we have calculated MGFs, even ordered movements. So these are all are the properties. Now we will come to the next property. This is a property number 3, limiting form of T distribution. तो मतलब क्या है कि जब हम T distribution के PDF को लिमिट लगाएंगे तो वो किसके PDF में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी. स्टेटमेंट क्या है, as n tends to infinity, the PDF of T distribution with n degrees of freedom tends to normal distribution. Limit n tends to infinity. जो पूरी आपकी
PDF होगा T का, that is converging to normal distribution, मतलब what we want to prove that this is 1 by under root of 2 pi e raised to power, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है. So this is the statement. I'm starting the proof that T follows T distribution with n degrees of freedom. PDF is given by f of T is equal to 1 by under root n 1 upon 1 plus T square by n minus infinity less than T less than infinity. ठीक है जी. अब now taking limit n tends to infinity. ठीक है. अब देखो एक लिमिट यहाँ पे लगेगी आपके, ये दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप. एक लिमिट यहाँ लगेगी. देखो जहां जहां n है वहां हर जगह लिमिट लगेगी अलग अलग तरह से. ठीक है. So limit n tends to infinity f of t f of t is equal to 1 by under root limit n tends to infinity f of t limit n tends to infinity 1 by under root n beta 1 by 2 n by 2. एक यहाँ लगा. Limit n tends to infinity 1 plus t square by n whole raised to power n plus 1 minus, okay, denominator में होता है, right? So this is equal to, अब देखो when we have limit n tends to infinity, नहीं सोचना भी यहाँ तो हमने लिमिट लगा दी तो ये सारा आंसर जीरो हो गया. जीरो हो गया तो एफ ऑफ टी तो जीरो हो गया. तो इसका मतलब टी तो हर वैल्यू पे जो है वो टी आपको जीरो दे रहा है. तो दिस डजंट एनी मीनिंग. तो हम इसको इसकी वैल्यू को प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. So limit n tends to infinity 1 by under root n. अब बीटा को आप ओपन कर लीजिए. दिस इज टा n by 2 टा 1 by 2 into टा of n plus 1 by 2. तो वो जो नीचे है जो डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर आ जाएगा टा n by 2. ठीक है जी. Then we have limit n tends to infinity 1 plus e square by n raised to power n plus 1. अब हम इसको भी सेपरेट करेंगे. अब हम इसको भी सेपरेट करेंगे. So this is equal to 1 by under root n. So अब ये what is टा 1 by 2? टा 1 by 2 is under root. लिमिट लगेगी लिमिट n tends to infinity टा n plus 1 by 2 टा n. राइट. यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करती हूँ. सो अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि टा फंक्शन पे जब लिमिट लगती है तो वी हैव अ स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड रिजल्ट. So this is equal to limit n tends to infinity 1 by under root n under root pi limit n tends to infinity n plus 1 by 2 n by 2. फिर यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे रहेगा अंडर रूट n 1 by अंडर रूट n. ठीक है जी. देन वी हैव, अब हम दो जो पावर्स में है उसको ओपन करेंगे. दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus t square by n. The one power is minus n by 2, right? And the other is limit n tends to infinity 1 plus t square by n raised to power minus. आपके पास minus n by 2 minus 1 by 2 पावर. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक रिजल्ट है limit n tends to infinity टा n plus k. Now this is 1 by 2 upon टा n. The value is equal to n raised to power.
अब यहाँ पे k की वैल्यू कंपेयर करो, ये हमारी k की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1/2 एंड n/2, तो वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए? इट कम्स आउट टू बी n/2, here is also n/2, राइट, n/2 रेज टू पावर। अब n, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? n/2। k का काम कौन कर रहा है? 1/2, ठीक है जी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट वी हैव द वैल्यू n/2 रेज टू पावर k। Therefore what we will get? 1/√10, here we have the value n/2 raised to power of k की वैल्यू क्या आएगी? What is the value of k? This is 1। ये एक स्टैंडर्ड है बेटा लिमिट हमारे पास, इसकी वैल्यू है -e² e रेज टू पावर -t²/2। अब जब आप यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, मतलब इनटू 1/√5, 1/√10, √10 upon 2, √2 e raised to power -t. So this will get cancelled. So you are only left with 1/√2 pi e raised to. What is this? This is the PDF of standard normal. Therefore, limit n tends to f of t is equal to 1/√2 pi e raised to power minus t²/2, which is equal to FGF of standard normal variate. Hence, for large degrees of freedom, t distribution tends to standard normal, right? So now we will come to the next property, number 4, mean deviation. About mean. We have the article A. These are the complete article in itself. Find the mean deviations, about mean, find the limiting form of the t distribution, derive the recurrence relations for the movements, right? Now let t follows A. Then mean of t, that is expected of t, that is mu1 dash, that is equal to c. So mean deviation about mean is given. बेटा फॉर्मूला क्या होता है? e of expected of t minus expected of t, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी t माइनस expected of t तो आपका 0 है, so this will be 0 into what into ft, right? Becomes minus infinity to infinity mod of t into ft। अब आपको पता है ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है? वैसे भी जब आप एफ ऑफ टी की वैल्यू लगाते हैं बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में आता है 1 + t²/n। इट मीन्स ये आपके पास एक इवन ऑर्डर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। सो जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि ये 0 to infinity और साथ में 2 टाइम्स आ जाएगा, राइट? इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to infinity dt into f of t. Right, now put the value of f of t here. So this is t upon, सारा कुछ डिनोमिनेटर में आना है, you know, beta 1/2 n/2
1 plus t square by n raised to power n plus 1 by 2, राइट. सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू अपॉन कांस्टेंट सारा बाहर निकाल लीजिए. बीटा 1 by 2 n by 2, राइट. इंटीग्रेशन 0 to infinity e into dt divided by 1 plus by n raised to power n plus. अब हम t square by n को पुट करेंगे. t implies t square is equal to ny, that is 2t dt equal to n dy. So इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है t dt की, क्योंकि ये t dt पड़ा हुआ है यहाँ पे. सो दिस इज n by 2 into dy, राइट. लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एज t tends to 0, y tends to 0, as t tends to infinity, y एक ही सिमिलर रिलेशन है. ठीक है. अगर डिनोमिनेटर में होता है तो इनकी वैल्यूज जो है बदल जानी थी. सो इट इम्प्लाइज we are finding the mean deviation. This is 0 to infinity 2 upon beta जो constant है, that is under root n beta 1 by 2. Now put all the values. This is n by 2 into dy 1 plus y raised to power n plus 1. Ultimately हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने बीटा इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना है. This is 2 by under root n beta 1 by 2. This is n by 2, right? 0 to infinity. देखिए ये कैन है, राइट. और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. ये यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रही हूँ, यहाँ पे आपका अंडर रूट n रह जाएगा. ठीक है. हियर इज n, हियर इज अंडर रूट. नाउ वी आर लेफ्ट विद हाँ. नाउ अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचा. y कोई नहीं है. ठीक है. आपने इसको इस फॉर्म में बदलना है. y minus 1 1 minus y raised to power या 1 plus y raised to n minus. ठीक है. तो इट मीन्स अब यहाँ पे तो y की पावर कोई है ही नहीं ऊपर, तो हम इसको क्या लिखेंगे. 1 minus 1 कुछ नहीं है. 1 minus 1 is 0, y raised to power 0 is 1. ठीक है. और ये ऊपर को आ जाएगा 1 plus y raised to power minus n by 2 plus 1 by तरह से. ठीक है. अब इसमें इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में -1 की फॉर्म में. ठीक है. अंडर रूट n बीटा 1 by 2 n infinity y raised to power 1 minus 1 into. अब हम इसको कैसे लिखेंगे. 1 plus y raised to power n minus 1 by 2 plus 1. सॉल्व करके देखिए. व्हाट यू विल गेट हियर इज n minus 2 n minus 1 plus 2 upon 2. तो कितना बन गया देखो, n plus 1. ठीक है. सो इट इम्प्लाइज just this becomes, so mean deviations become under root n upon beta 1 by 2 n by 2. ठीक है. तो वो हमारे पास बन जाएगा बीटा 1. अब देखो ये बना था n minus 1 by 2 plus. ठीक है. तो हमें उसको -1 में कन्वर्ट करना है. तो इट इम्प्लाइज आपका जो पैरामीटर यहाँ आएगा वो बनेगा n minus 1 by 2 डिवाइडेड. सो दिस कम्स आउट. अब इसको आप ओपन कर लीजिए. सो दिस इज बीटा 1 by 2. बीटा हियर इज 1 by 2. टा में कन्वर्ट करिए. दिस इज टा 1 by 2 प्लस ये ऊपर आ जाएगा n by 2 डिवाइडेड बाय टा 1 by 2 into ta n by 2 into this is ta 1 ta n minus 1 by 2 divided by ta 1 plus n minus. Okay, so this comes out to be this is ta n plus 1 by 2
टा 1/2 मेरे टा 1/2 इज अंडर रूट पाई, हेयर इज टा n by 2, ठीक है। टा 1 पीछे तो टा 1 आया था, टा 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और दो साथ में क्या था, टा ऑफ टा n minus 1/2, है। नीचे जब आपने दोनों को ऐड किया तो वो बन जाएगा टा ऑफ n plus 1/2, so this got cancelled, so mean deviation about mean comes out to be under 10 upon under root pi टा n minus 1 upon under root टा root n by. So this is a mean deviation about mean, right? I hope the point is clear to all of you.